न्यूज़ 18 के व्यूवर को जुले और नमस्कार। आज हम लोग का उर्सी गांव पहुंचा है जो लेह से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ गांव वाले ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है जो मिस्टर जॉन की मदद से। तो विलेजर्स को कितना फ़ायदा हो रहा है वो हम गांव वाले से पूछेंगे। हमारे साथ जॉन जुड़ा है। मिस्टर जॉन, यू आर हेल्पिंग द पीपल ऑफ उर्सी फॉर this glacier and they are benefiting with this. I'm very privileged to be able to help them. I come from a long way away, but I feel part of the family here in this place. And to see everybody here today is wonderful. That, I'm very happy to provide the pounds, but it's the village people here who make all this work. Okay. And if there's a message to give to Ladakh today, please, if you have artificial glaciers, the villagers must look after them because it has a lot to do with the future of Ladakh. And these people in this village, they're old, some one or two of them are as old as I am, but the majority are a generation lower than I am. And it'll be their efforts that keep people coming back to their villages, their families to keep coming back, living in their villages. As long as we can give water, then you've got life. And it's for us to be able to do that for very little money. It's a real privilege, and I'm very grateful to them all. Okay, over the past few years, there has been less snowfall in Ladakh region due to global warming. So, Ladakhis has found out a way to build artificial glaciers. So, one of these days, the Ursi village, they are highly benefiting out of it. What do you say? Yes, well, it's wonderful. They say 8 years since we had snow like this. Yes. So we had snow in UK. Okay. We had it at 9 o'clock in the morning, and by 11:30 it was gone. And that's all we had of a winter this year. And we used to have winters like this. So it's good to see the winter back and that people take advantage of it because they need it for their crops, they need it for their animals, and they need it for their home lives. And so I encourage everybody, if you need, the most important thing is if they need a artificial glacier built, from my point of view, the person to talk to is Rigzin. But there are so many more people interested in artificial glaciers. It's a new thing. So we have to try it out. We need feedback. Do you understand feedback? Yes. Well, we need feedback from these people, from the villagers here, as to how good it is. Somebody has just told me now that for the first time, for a generation, soldiers who are retiring from the army, who normally retire and go and live in Leh, some of them are beginning to come back to the village to live. Well, that's fantastic. And when I first came here, I think it was one of these gentlemen here told me that this village was preparing, because of lack of water, they were preparing to move to the Leh Valley, which is going to become totally overcrowded. And without the water, they would have already gone. Now we've provided, with a few pounds, with a few rupees, few lakhs, been able to provide this. Very, very simple. It's a pipe in the glacier to an artificial glacier to the village pond. That's all we do. And if that is a solution, and it can keep the village going for generations to come, and I suppose in a way it is for the children to come, let's keep it going, because the traditional life of Ladakh is a problem. If it's not sustained in the village, it will not be sustained. Okay. So well done to everybody. Okay. That's what I want to say. Last message to the villager. Oh, I will be back in August. It is my message. It's wonderful to come here and to see everybody that have come out just to see this old Westerner. We used to be here before. Do you know when all the expeditions used to start going north, they used to come to Leh and off they would go. Now if I say to people, I'm going to Leh, they say, where? I say, well, it's called Little Tibet. No. I say, we don't know. It's called Ladakh. No, they don't know. So I actually broadcast the message of Leh and Ladakh and Ursi to people who live in the UK, because it's a wonderful place. It's my second home. I think it's Ashok's second home too. We love coming here. We feel that we are made so welcome by everybody, but especially by the villagers of Ursi. It's my privilege to be part of their family. Thank you, sir. Thank you. हमारे साथ जो उर्सी गांव के निवासी रिगजिन जी है, जिन्होंने ये विलेजर्स के मदद से ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना, तो गांव वाले को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उर्सी एक ऐसा गांव है जो पानी की शॉर्टेज के मामले में मेरे ख्याल से 1-2 नंबर पर आता होगा लद्दाख में। क्या बोलेंगे सर?
थैंक यू ग्रुप जी, आपने सही फरमाया है। हमें ये मालूम पड़ा जब LNP ने एक सर्वे कंडक्ट किया था 80s में, तो ग्लोबल वार्मिंग का जब इम्पैक्ट उर्सी जैसे चंद गाँव में लद्दाख में पहले हमें देखने को मिलेगा, और उसका असर हमें वाकई में देखने को भी मिला, जिसके चलते हमने 2019 में यूथ स्तर पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की कोशिश की। और शुरू में हमें एक UK बेस्ड NGO लोटस फ्लावर ट्रस्ट ने हमें यहाँ का जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की मदद दी, और जिसके चलते हमने आर्टिफिशियल बनाना शुरू किया। और जितने भी यहाँ मैनुअल लेबर काम था, लोगों ने श्रमदान करके, वॉलंटियर करके, गाँव वालों ने किया, और इसको आज तक 7 साल से बहुत अच्छी तरह मेंटेन गाँव वाला करते आ रहे हैं जी। तो सर, ये आपकी गांव का जो वाटर सोर्स है वो सिर्फ यही जो पीछे से देख रहा है वही है, बोला हमें बताया गया है। तो अभी जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर इतना सक्सेसफुल बताया गया है कि लद्दाख के ऑल रीजन में ये 2nd नंबर पर है, क्या बोलिए? जी, मेरे ख्याल से ले डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो, पूरा लद्दाख में, UT लद्दाख में मैं ये दावे के साथ कह पाऊँगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्टिफिशियल ग्लेशियर कहीं हो तो उर्सी ग्लेशियर होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पिछले 3-4 साल से विटनेस किया कि हमारा ग्लेशियर 8 अगस्त तक रहता है। और ग्लेशियर का ज़्यादातर फ़ायदा ये होता है, आपको जब बारिश होता है तो 2 दिन के लिए पानी आता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ग्लेशियर पिघलते पिघलते कम मात्रा में, मगर वो कंटिन्यूस चार्ज करता है स्ट्रीम्स को, या ड्रिंकिंग वाटर को, या इरिगेशन वाटर्स को। यहाँ से जितने भी पानी हमें मिलता है मेल्ट होके, वो हम सीधा पाइप के ज़रिए, हमारा एक रिजर्वर है, एक पॉन्ड्स है, तालाब में जमा करते हैं, और ट्रेडिशनली गाँव वालों का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको फॉलो करके हम इरिगेट करते हैं। जी सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन का कोई प्रोजेक्ट है? क्योंकि हमें बताया गया यहाँ पर 17-18 हाउस होल्ड है, तो गाँव वालों की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, अभी हमारे पास ये ग्लेशियर है, उसके बाद भी जितना पानी फ्रीज होता है वो तो हो ही रहा है, और कुछ परसेंटेज 10%, 5% पानी बहता भी है। हमारा कोशिश ये रहेगा आने वाले सालों में, हमारा 2 वैली है वो, जहाँ से 2 छोटे छोटे चश्मे हैं, उनको भी ला के यहाँ एक रिजर्वर करके 3 महीना वो पानी, उस पानी को भी हम स्टोर करने की कोशिश करने का हमारा एक प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जो उर्सी निवासी जो रिक्जिन नंगा, जिन्होंने भी जो यूथ के साथ, गाँव वाले के साथ एफर्ट बना कि ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया, तो बहुत ही सक्सेस है। आपको बता दूं कि उर्सी गांव का जो वाटर सोर्स है वो सिर्फ नेचुरल चश्मे या स्प्रिंग के हिसाब से ही आता है, वहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, नेचुरल ग्लेशियर। तो लोगों ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया, पिछले 7-8 साल से बना हुआ है। तो ये बहुत ही सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है लद्दाख में जो वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के। मैं मुरुख नेटवर्क 18 के लिए उर्सी गाँव से।